welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या न्यूकमर्स के बाद अब उलिया वैंतूर को भी सलमान खान देंगे बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक? टाइगर श्रॉफ के एब्स पर फिदा हुए रणवीर सिंह. हाउस हेल्प के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोनी कपूर और उनकी फैमिली ले रही है प्रिकॉशंस. नीतू कपूर को फिर याद आए लेट वेटरन एक्टर ऋषि कपूर. देसी गर्ल और उनके फिरंगी हस्बैंड निक जोनस लॉकडाउन में भी हैं सुपर एक्टिव. फ्रॉम हेल्पिंग पीपल इन नीड टू लर्निंग न्यू स्किल्स, प्रियंका और निक हैं सुपर बिजी अमिड्स कोविड-19 लॉकडाउन. प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया था कि निक जोनस उन्हें दे रहे हैं पियानो ट्रेनिंग. ऐसे में निक जोनस से एक इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया अबाउट हिज पियानो लेसन्स, तो निक ने कहा प्रियंका है एक क्विक लर्नर, लेकिन वो नहीं है एक ग्रेट टीचर. शी इज वेरी म्यूजिकल एंड शी पिक्ड अप वेरी क्विकली, बट आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर. I'll admit that. I would love to learn how to best explain what is what because I learnt by ear. So I had no sort of reference point. अपने इसी इंटरैक्शन के दौरान निक ने बताया कैसे प्रियंका उनकी सिंगिंग रियलिटी शो की बड़ी फैन है. And whenever he tries to share any details of the show before it goes on air, Priyanka gets mad. Nick said, "She has been very helpful with the voice stuff. We have set up all the gear at home and we are going live each time from here. She gets mad because we go live from the East Coast and we are in time delay for the West Coast. She loves the show so much that she gets mad if I say anything about what happened. So I stay quiet for 3 hours till the results are actually on live. Otherwise, she is very unhappy with me." घर में एक जज के होने के बावजूद प्रियंका चोपड़ा टेलीविजन पर शो की डिटेल्स जानना ज्यादा पसंद करती हैं. प्रियंका और निक की यही नोक-झोंक उन्हें बनाती है वन ऑफ द स्वीटेस्ट कपल्स. वैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस इस लॉकडाउन को ले रहे हैं एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से ये लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं. रिसेंटली निक जोनस ने अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका के साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर कहा, "We only got married like a year and a half ago, so it's been nice to actually have some time at home together, which we didn't have. Similarly, she's really busy as well in this time, and we're working from home. So we have that time where it's sort of structured, like we work out together, do our thing, and then do our work and come back and have our nights together. And it's really lovely. She's the best and I'm quite happy." Priyanka और Nick है एक ideal couple and they surely give couple goals to everyone around them. Good morning. Who's that? What is that? Well, he doesn't have a name yet. टाइगर श्रॉफ के 10 पैक एब्स को देखकर फीमेल फैंस का क्या हाल होता है
इट्स नॉट अ सरप्राइज। लेकिन अब टाइगर श्रॉफ के 10 पैक्स पर फिदा हो गए हैं रणवीर सिंह। Well, you heard it right. रणवीर सिंह को टाइगर श्रॉफ दे रहे हैं सीरियस फिटनेस गोल्स। टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की ये पिक्चर। ऐसे में टाइगर श्रॉफ की ये पिक्चर रणवीर सिंह को इतनी पसंद आई है कि इसका अंदाजा आप रणवीर सिंह के इस कॉम्प्लीमेंट से लगा सकते हैं जो उन्होंने टाइगर श्रॉफ की इस पिक्चर पर दिया। रणवीर wrote, 10 is the new 6। Well, टाइगर श्रॉफ के एब्स डेफिनेटली हैं फिलहाल बेस्ट इन बी टाउन और रणवीर सिंह जो खुद है एक फिटनेस फ्रीक टाइगर श्रॉफ से ले रहे हैं सीरियस इंस्पिरेशन। वैसे रणवीर सिंह ही नहीं, ऋतिक रोशन ऑल्सो फील्स फिटनेस के मामले में टाइगर श्रॉफ का कोई जवाब नहीं और यही वजह है कि ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ के हर एक पोस्ट को करते हैं लाइक एंड ऑफन शेयर्स कमेंट एज वेल। टाइगर श्रॉफ अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने इंटेंस वर्कआउट के वीडियोस शेयर करते रहते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी पसंद भी करते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने इस वीडियो को भी शेयर किया था एंड ही wrote, haven't felt the air up there in ages। टाइगर श्रॉफ की जिम वीडियो हो या फिर उनके सुपर फ्लाइंग स्किल्स, बॉलीवुड में फिलहाल उनके जैसा दूसरा एक्शन स्टार और कोई नहीं दिखाई दे रहा। और जिस अंदाज में टाइगर श्रॉफ अपनी मेहनत से फिटनेस के बार को ऊंचा कर रहे हैं, बी टाउन के बाकी एक्टर्स को उसके करीब आने के लिए भी करनी होगी सीरियस मेहनत। वैसे टाइगर श्रॉफ के फिटनेस को अगर बॉलीवुड में कोई चैलेंज कर सकता है तो वो रणवीर सिंह ही है। ऐसे में अब देखना होगा कि टाइगर श्रॉफ के 10 पैक से इंस्पिरेशन लेकर रणवीर सिंह अपने 10 पैक एब्स की पिक्चर कब शेयर करते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच बोनी कपूर अपनी डॉटर जानवी कपूर और खुशी कपूर के साथ ले रहे थे कंप्लीट प्रिकॉशन। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि बोनी कपूर का डोमेस्टिक हेल्थ पाया गया है कोविड-19 पॉजिटिव। और अब बोनी कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर की हेल्थ को लेकर फैंस हो गए हैं वरीड। बोनी कपूर ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस न्यूज को कंफर्म भी कर दिया है। बोनी कपूर का कहना है उनका डोमेस्टिक हेल्थ कोविड पॉजिटिव है और मई 16 से ही वो आइसोलेशन में है। वैसे बोनी कपूर का ये भी कहना है कि वो बीएमसी के सेट किए गए सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात ये है कि फिलहाल उनकी फैमिली के किसी मेंबर या उनके घर में बाकी काम करने वाले किसी शख्स में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए हैं। बोनी कपूर ने अपने घर में मिले कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पर स्टेटमेंट में कहा है, Myself, my children and other staff members at home are all fine and none of us are showing any symptoms. In fact, we haven't left our homes since the lockdown started. We are thankful to the government of Maharashtra and BMC for their swift response.
We shall be diligently following the instructions and advice given to us by BMC and their medical team. We are sure that he would soon recover and be back at home with us. बोनी कपूर की पूरी फैमिली फिलहाल अपने डोमेस्टिक हेल्प की रिकवरी की दुआ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अचानक ये केस सामने आया है उससे ये बात भी क्लियर है कि तमाम कोशिशों के बावजूद एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो कोरोना से नहीं बचा जा सकता। बोनी कपूर की डॉटर्स जानवी कपूर और खुशी कपूर आज से कुछ दिनों पहले तक सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव थीं, लेकिन अचानक आई इस न्यूज के बाद दोनों सिस्टर्स क्वारंटीन में चली गई हैं और फिलहाल वो सोशल मीडिया से भी दूर हैं। We just wish बोनी कपूर का डोमेस्टिक हेल्प हो जाए रिकवर और उनकी फैमिली भी रहे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। Coming up on the show, अर्जुन कपूर ने Zoom से की candid conversation. Vicky Kaushal is part of nepotism or not, I don't understand, because his father has been an action director for years. Karthik, so many years. And whenever I met Karthik, even when he was starting out with a Pyar Ka Panchnama, we always had an equation that was of people that cared about each other. It wasn't ki yaar, tu bahar se aur main yahan se. I don't feel is fair because everybody has their own journeys and struggles. I don't negate. I have been through my hell. Another person must have been through double the hell. But I can't keep my head down because of it. I can't be apologetic for it. And I can understand your emotion and maybe I will never go through the struggle. But ऐसा थोड़ी ना कि आपकी struggle हमारी struggle कुछ नहीं. Something I can share now, but like we had not touched her room for 6 years. But then the point is, it's not the most normal thing to do is to have one room completely locked up forever when you don't have place in the house, right? So, but it's just for me and Anshala, this house is her. So now what happens is you kind of, every day I go out, I do everything to make people happy and make myself happy and celebrate life and be an actor and be the star and there's love and there's selfies and maza aa raha hai, shooting career, living the dream job. And then you come back home and I can't tell her what I did. So it just feels kind of incomplete. मैं कुछ भी कर लूँ वो एक void रहेगा ही रहेगा. Welcome to Speak Easy. My name is Rudrani and I'm in conversation with an actor who's named himself Yoni Baba during this entire quarantine lovingly, Arjun Kapoor, who is always finding ways to keep us entertained. Arjun, Yoni Baba is quite an apt description towards the beginning because I think Is it? I mean, we all have been going through it, haven't we? Well, I guess you can't have great days all the time in this quarantine. There are some lazy days, some bad days, some indifferent days. So I think the gamut of moods that we've experienced through these 2 months are equivalent to an entire screenplay of a film. You know, you go through highs and lows. तो ऐसे लग रहा है कि पूरी फिल्म जी ली है, पर अभी प्रॉब्लम ये कि हमें पता नहीं इस फिल्म का क्लाइमैक्स कब आएगा. तो we are all in limbo. That's the only thing. I remember you went on Instagram Live and you were talking about how your day starts with like 9 a.m. and then deciding to eventually, and then of course, skipping breakfast. Yeah, because I mean, eventually what happens in this time is that the discipline you create is your own. It doesn't have to be the process of what the world expects your discipline to be. So, अब 7 बजे उठ के या 8 बजे उठ के या 9 बजे भी उठ जाओ. जो अगर आपकी जिंदगी, if you are somebody who wakes up early, you'll wake up early. But there's no clock to say this is the right time. If you're a late riser and if that makes you happy, this might be the one time where nobody will hold it against you if you're sleeping till late. It does. I mean, see, everybody saying you should be healthy and you should be disciplined and all, but abhi to whatever makes you happy is the new healthy, I guess, at this point. And that doesn't have to necessarily be by the rules created by society.
तो मैं कभी कभी 10 बजे उठता हूँ, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी कभी 12 बजे भी उठता हूँ. तो जैसे मैंने I binged watched Patal Lok yesterday, so I woke up late today because I was watching it till 5 in the morning. But that's just me. I've always been nocturnal. I'm somebody who prefers being awake when the world sleeps. I've always felt like कि वो मेरा time है. So there are no rules in this lockdown to make yourself feel stable and sane and happy. I loved it more because this is the kind of prep I was doing for Diwakar sir's film, for Sandeep or Pinky Farhad. This was the world that I went and submitted into. I went and I worked with Jaideep also in that. Sandeep or Pinky had Jaideep in it. He was my boss in the film. And this is exactly how the world of the cops and the politicians and the construction world sort of comes together in that environment. I've seen it in the prep when me and Devakar spent a month and a half there together. So it just felt like I'm watching my own prep time. You know, I've been to those police stations and I've dealt with those cops and those guys who are having chai and biscuit low. I've seen that environment in a very strange way, even though I was not a cop, but I've seen it happening around me. I want to know what is happening regarding the release, because right now with the direct to OTT release option, there is. So I haven't spoken to Adi sir about it since when I was promoting the film, and 13th or 14th of March was the last day of promotion when we were told that the lockdown is going to be implemented to some degree. So we had called off the release. At that point of time, we were gearing up for release. So I've not had a detailed chat with Adi sir or Debakar sir, but I know the film is ready. It was supposed to release in 7 days when the lockdown was announced. So I'm of this opinion, it doesn't matter what the platform is, as long as you can get the film to reach people at the end of the day. When society deals with new issues, you have to find new solutions. Yeah. So there is a certain section of our profession that will feel theatre is the way to go. At this point, we need to adapt to whatever's happening. That does not mean that we are not going to be going to theatres. Some films might not be able to hold off, some films can. Where Sandeep or Pinky is concerned, I am not the right person because that comes under YRF's jurisdiction. But I know, knowing Adi sir, he is very aware of the situation, and whatever he decides will be keeping everything in mind. So that way, I'm mentally quite calm. Having a producer and a filmmaker who's very wary of circumstances when it comes to theatres, OTTs, everything. So, wo jo bhi decision lenge, it will be taking everything into account. That today, at the position that you are, what are things that you still feel you're sort of struggling with when it comes to, whether the choice of roles or breaking off a mindset or a typical image? What is it that? What are the observations? जब आप एक मकाम पर पहुंचोगे, तो लोग आपके बारे में बात करेंगे. अच्छा हो या बुरा हो वो पता नहीं, लेकिन बात जरूर करेंगे. You will be spoken about in every conversation because you become accessible to every person. You will not be able to please everybody. You will try at the beginning of your career. You will not be able to. Then you'll stop trying to please everybody and you'll end up pleasing more people. And at the end of the day, things will become more intimate and personal. From enjoying all that love and attention, you will start just enjoying the fact that you are by yourself, doing work, coming back home, and doing the kind of work that you enjoy, interacting with people. So from the paraphernalia and the mela of being celebrated to just wanting your own moment and your privacy and realizing why you started out in the first place. So you have to lose yourself and find yourself again in the course of this career. It is just natural.